development and pedagogy. And in this session, we are going to discuss a very important topic which all teachers are ought to know, and CTET also does ask questions regarding this new education policy, our new National Education Policy 2020. So we're going to understand what is the structure, new structure proposed under NEP 2020, and what is the spirit that in which it talks about, and the stage-wise recommendations that have been given by our National Education Policy 2020. Before I start, let me introduce myself. I am M. Pavan Kumar, a Senior Research Fellow from Regional Institute of Education NCERT, Mysuru. And let us proceed with our today's session, that is National Education Policy 2020. So, we need to remember that the new education policy that we call the National Education Policy has proposed a lot of changes and lot of necessary and timely changes that had been required, because it has been a long time since we had our last National Education Policy. So there has been a change in the basic structure of schooling now. We have moved away from the 10+2 system. If you see, the earlier system was the 10+2 system, and now we have moved away from 10+2 system to the 5+3+3+4 system. So now we have moved to a 5+3+3+4 system, and it is very important for teachers to remember this and know and understand what is this 5+3+3+4 system, what are the different levels that NEP proposes, and why is it necessary. Okay, so we are going to discuss about when did it get approved, what did it replace, and the 4 stages of schooling that replaces the 10+2 ladder as I was discussing before. Moving on, we will also be discussing the key recommendations that the National Education Policy 2020 has given. The key recommendation with respect to early childhood care and education, with respect to foundation literacy and numeracy, and also with respect to language, right? So, this is a flagship reform, right? And lot of discussion, lot of recommendations have been made with respect to early childhood, foundational literacy, mother tongue, and assessment. We should also remember that our National Education Policy 2020 was the first policy that recommended that there should be a national curriculum framework for foundation stage. And subsequently, we got our National Curriculum Framework for Foundation Stage 2022, which we'll be discussing in the next session. Then, for you teachers, what is very important? Right? What will be asked in paper 1, paper 2? What NEP specifically recommends for the primary and upper primary age group you teach? Right? So this is all we are going to cover in today's session. So let us start. Let us start with a question then. The question goes like, NEP 2020 approved on 29 July 2020 replaces which earlier policy, making it the first full education policy in 34 years? Is it option A, National Curriculum Framework 2005? Is it option B, National Policy on Education 1986? Option C, Kothari Commission Report 1966? Or Right to Education Act 2009? Try to recall. I hope you have selected your answer. So, the National Education Policy replaces the 34-year policy of NPE 1986. So this is a very common question that is asked, and one might very easily get confused, especially the teachers. Remember, they have asked about policy framework. Here they are asking about a education policy, right? They are not asking about a curricular framework. So NCF 2005 is automatically ruled out here because it is a curricular framework, not a policy, right? Kothari Commission report was not actually a policy. Right? It paved way for preparing the first national policy on education, but it was not a policy. It was not a specific national policy on education. Then Right to Education Act 2009 is an educational act. Okay, it's a fundamental right that was passed through the RTE Act in 2009 that made education free and compulsory for children from age 6 to 14 years of age. Right? So correct answer here is National Policy on Education 1986. Okay. So, as we go ahead, placing NEP 2020 correctly is very important, because this is where many people get confused while they attempt the CTET examination. NEP 2020 replaces the National Policy on Education 1986, last revised in 1992. The revised 1992, if you remember, is known as POA, Plan of Action.
right? So the first new education policy in 34 years, it was approved on 29 July 2020. A very important date to remember. 29 July 2020 was the date our new education policy was approved. So please don't confuse it with NCF 2005 as I was discussing before, which is a curriculum framework, not a policy. Okay, NCF 2005 is a curricular framework and not a policy, right? A policy sets vision and direction. A policy sets vision and direction. It gives major recommendations that need to be brought in. And what does a framework do? A framework operationalizes it into a curriculum. That is the difference between a policy and a curriculum. So NEP 2020 is the parent document, and under NEP 2020, 4 curricular frameworks were suggested, and of which we have already got 2 and 2 are already in process. Very soon we'll have the other 2 also. So the first one is the National Curriculum Framework for Foundation Stage. Okay, the first one is NCFFS, which came in the year 2022. National Curriculum Framework for Foundation Stage, and soon after that in the next year we got our National Curriculum Framework for School Education 2023. Okay, so the National Curriculum Framework for Teacher Education, and also for the first time post independence we are going to get a National Curriculum Framework for Adult Education under the leadership, under the vision of National Education Policy 2020. So let us quickly remember the facts that we need to know. It was approved on July 29, 2020 under the Union Cabinet or by the Union Cabinet. It replaces NEP 1986, a 34-year-old policy. Then first education policy, as I was saying, in 34 years. One more important information that we need to remember is it was drafted by a committee under the chairmanship of Dr. Kasturi Ranganji. Very important, please remember this aspect also. Dr. Kasturi Ranganji was the chairman of the drafting committee of National Policy on Education 2020. So policy talks about the vision, and curriculum framework talks about how this vision can be implemented. This is the difference. Policy talks about what should we achieve, and the curricular framework talks about how can we achieve it. Okay, I hope you're clear about this. Let us move ahead. Now, a very important distinction, a very important change that has been brought under NEP 2020 is the new structure. We are moving away from 10 plus 2 to the new 5 plus 3 plus 3 plus 4 system. So let us now understand in detail what is this 5 plus 3 plus 3 plus 4, so that if questions are coming in the CTET examination, you will be able to easily understand and answer them. So the first 5 years, for the first 5 years are known as the foundational stage. Okay, the first 5 years are known as the foundational stage. This is for age 3 to 8. The foundational stage is for the age group of 3 years to 8 years. Earlier it used to be said that a child can enter formal schooling at the age of what? 6, right? But now there are a lot of research. In yesterday's session we were discussing, right? In the previous session we were discussing that kindergarten system, right? Or we were discussing about the Montessori system, and there are a lot of research that suggests that learning happens at a very high rate at a very early age. So our National Policy on Education also took it in cognizance, and now students can enter, children can enter formal schooling at the age of 3, and this comes under foundation stage. So the stages are pre-primary to class 1 and 2. Now this pre-primary has got a specific name under NEP 2020. Okay, so if we'll take this pre-primary, so it is known as Balavatika. Please remember this. The pre-primary is known as Balavatika. So we have Balavatika 1, we have Balavatika 2, and we have Balavatika 3. Okay. So Balavatika 1 is when they enter at age 3. But at age 4, they will move on to Balavatika 2, and at age 5, they will move on to Balavatika 3. Then from Balavatika 3, they will be moving on to class 1, and then they will be moving on to class 2. So all these 5 years, Balavatika 1, Balavatika 2, Balavatika 3 and class 1 and 2 together has been formulated under this foundational stage. So the first 5 years of schooling, that is Balavatika 1, 2, 3 and class 1 and 2 comes under the foundation stage. Now why is this stage called the foundation stage?
Because at the foundation stage, we are emphasizing more on learning of the foundation literacy and foundational numeracy. Foundational literacy talks about understanding basic language, right? And also able to read and write. Similarly, it also goes for foundational literacy. Okay, numeracy, that where we know the basic numbers and the other things related to that. And what NEP is suggesting, how learning should happen at this stage. NEP is not only suggesting a new structure, but NEP is also discussing about how learning should take place at these stages, right? So for foundation stage, the learning should be play and activity based. Learning should be play-based and learning should also be activity-based. Activity-based and play-based learning are not new concepts. If you'll go back and see what the states have done, Indian states have done, activity-based learning was brought way early in the state of Tamil Nadu and also in the state of Odisha. In Karnataka, it was brought under the banner of Nalikali, right? So NEP has taken the cognizance and what has happened, how it enhances learning. So students should learn through play. Students should learn through activities. So play-based and activity-based learning should be the method of teaching, method of learning. I should say first, learning comes first. So method of learning at this stage. Then ECCE begins formally. ECCE. ECCE. ECCE stands for Early Childhood Care Education. Please remember, ECCE stands for Early Childhood Care and Education. So, ECCE begins formally, and one major instruction that NEP 2020 has given is the learning medium should be in the mother tongue. This is a very important and a very meaningful recommendation given by NEP 2020 that learning should happen in mother tongue, right? Then focus should be majorly on development of language and development of motor skills. Motor skills are nothing but how they use their hands to write, read and other things. Okay, so these are the major recommendations given. So please remember the foundation stage is for 5 years, which consists of Balvatika 1, Balvatika 2, Balvatika 3, class 1 and class 2. Balvatika 1 age 3, Balvatika 2 age 4, Balvatika 3 age 5, and at age 6 the child enters class 1 and age 7 class 2. So this makes the foundation stage. Now let us move from foundation stage to the next stage, that is known as the preparatory stage or the preparatory stage. Now this preparatory stage is from age 8 to 11, right, or class 3 to 5. So preparatory stage, we are preparing the child. Now the foundations have been given. Now we are preparing the children for the next stage. So how this preparation happens? First thing is the learning should be interactive and discovery based. The learning should be interactive in nature, where students collaborate and cooperate with each other, and they learn through discovery. They learn through activity and they learn through discovery. And reading, writing and mathematics is something that is introduced here, and also EVS is introduced. What happens in the preparatory stage? The activity and play-based learning is being continued. The activity and the play-based learning is continued from foundation stage to the preparatory stage. They are saying that no, activity and play-based should not be removed once the foundation stage is over and the child enters the preparatory stage. No, it should continue. Then comes the next stage, the next 3 years, that is the middle stage. Now this middle stage is for age 11 to 14 or class 6 to 8. And here what happens, once they move from preparatory stage to the middle stage, here subjects start, segregating. Subject teachers begin. Here separate subject teachers will be there. In preparatory, one teacher can handle EVS, English and mathematics simultaneously, right? But when they enter the middle stage, here separate teachers will be there. Separate teachers for science, mathematics, English, Hindi, social science, mother tongue and so on, right? Here concepts and abstraction takes place. Abstract concepts will be introduced to the learners, and the way of learning, the method of learning that is suggested. Please remember the teachers who are attempting paper 2, a very important aspect, that is experiential learning. Okay, experiential learning is something that the new education policy is emphasizing,
The way of learning, the approach to learning should be experiential learning for the middle stage, from class 6 to 8. So in CTET paper 2, they might ask which is the major learning approach that our National Policy on Education 2020 recommends. So the correct answer here is experiential learning. With experiential learning, they're also talking about inquiry-based learning. Inquiry-based learning should also be one of the approach of teaching, and they're not limiting it to just experiential or inquiry. They have suggested a lot more. If you'll go through the document, you'll be able to see that multiple pedagogical approaches have been suggested for each stage. And vocational exposure should start from this phase, right? From this stage, that is the middle stage, vocational exposure should start. Industrial exposure and exposure related to different vocations that are there should start. Then we come to the last 4 years, that is the secondary stage. Secondary stage is from age 14 to 18 and covers class 9 and 12. One important aspect that I have not mentioned here in the PPT, I will write here, is this secondary stage is divided into 2 phases. First it is phase 1, then it is phase 2. Okay, phase 1 and phase 2. Phase 1 is of class 9 and 10. Phase 2 is of the class 11. Just a minute. Yeah, is of the class 11 and 12. Okay, please remember, last 4 years, if they ask specifically about phases, you should be able to remember that phase 1 is 9 to 10 and phase 2 is 11 and 12. So what have they suggested here? Multidisciplinary choice should be provided. The hard separation of subjects that used to happen before, right? A student can only take science or only take arts. Now it is not like that. NEP 2020 is giving flexibility and also multidisciplinary choice for learners. Here the focus should be more on critical thinking, right? And flexibility should be provided. The subject should be flexible. And as I was talking about before, 2 phases. The phase 1 is 9 to 10 and the phase 2 is 11 to 12. Okay, let us move ahead then. I hope you are clear with the 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure that has replaced the very old 10 plus 2 system. Moving ahead, let us go with a question now. I think you'll be able to easily answer this. In NEP 2020's 5 plus 3 plus 3 plus 4 design, the foundation stage covers which age group? Option A, 0 to 3 years. Option B, 3 to 8 years. Option C, 8 to 11 years. Or option D, 11 to 14 years. So we have just discussed about this. Try to see, the question is asking about the foundation stage. Please remember, do not confuse the stages. Remember, it starts with foundation, then goes to preparatory, then middle, then secondary. So the foundation stage, which one covers? Is it 0 to 3 years, 3 to 8 years, 8 to 11 years, or 11 to 14 years? Yes? So the correct answer here is 3 to 8 years. Okay, it covers 3 to 8 years. So 3 years of pre-primary, or we should say Bal Vatika. Okay, 3 years of Bal Vatika and class 1 and 2. Okay, 3 years of Bal Vatika and class 1 and 2. 3 years of Bal Vatika means Bal Vatika 1, Bal Vatika 2 and Bal Vatika 3. So why 5? Why the 5 in big reform? The foundation stage spans ages 3 to 8, right? 3 years of primary education, that is, earlier it was in Anganwadi or preschool. Then, now the present structure is compiling them, right? Plus class 1 and 2. That is the 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure. For the first time, ages 3 to 6, early childhood, are formally part of school structure. This was never done before. If you will be able to recall, or even now you can see at some stages that the preschools that are there, the kindergartens that are there, right, or the Montessori schools that are there, they are not part of the formal schooling system. Now it has been included in the formal schooling system, right? So foundation is 3 to 8, if we quickly recall. 8 to 11 is preparatory, middle is 11 to 14 and secondary is 14 to 18. So please remember, it's foundation, preparatory, middle, secondary, and it replaces the 10 plus 2 old system. Moving ahead, let us look into the flagship reforms that the NEP 2020 has brought in. तो ये फ्लैगशिप 6 recommendations appear. जो 6 recommendation है हमें बार बार दिखते हैं.
ओके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे सीटेट में उसमें ये 6 रिकमेंडेशन बार बार दिखते हैं. Know what each one means in one line. It's very important for us. That's why what we have done is we have segregated them and brought in under one line. The first one, as I said, ECCE is Early Childhood Care and Education. ECCE means Early Childhood Care and Education. It is for age 3 to 6 and brought into the formal system for the first time. As if just we were discussing this 5 plus 3 plus 3 plus 4, the first 5 years, in that the first 3 Balvatika years has been first time formally brought into the school system. Then FLN. FLN stands for Foundational Literacy and Numeracy. A national mission for foundation literacy and numeracy has been initiated. Every child reading and doing basic mathematics by grade 3 is what NEP 2020 visions. Right? NEP 2020 कहता है कि हर बच्चा जब वो ग्रेड 3 तक आ जाता है दे शुड बी एबल टू वो बच्चा लिख सके, बोल सके और बेसिक मैथमेटिक्स कर सके. फिर आता है मदर टंग जो एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनईपी 2020 का जो कहता है कि होम लैंग्वेज मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एवरी स्कूल एटलीस्ट टिल ग्रेड 5. ठीक है, क्लास 5 तक जो है मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप ईवीएस पढ़ा रहे हो या फिर आप दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस भाषा में पढ़ाई होती है वो मदर टंग में होनी चाहिए. और अभी डिस्कशन चल रहा है कि इट शुड बी एक्सटेंडेड टिल क्लास 8 बट व्हाट एनईपी हैज सजेस्टेड इट शुड बी मेड कंपल्सरी टिल क्लास 5. रिमेंबर टिल ग्रेड 5 एंड प्रिफरेबली एज रिटन हियर टिल ग्रेड 8. देन नो रिजिड स्ट्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन. एनईपी 2020 कहता है कि सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट के बीच में जो ये है ना बैरियर्स है उनको निकाल देना चाहिए. बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ये है जिसमें कहते हैं कि देयर शुड बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन मैथमेटिक्स, बिटवीन सोशल साइंस, बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स. NEP 2020 says that there is lot of overlapping that happens and meaningful learning can take place when different disciplines are combined together. Right, interdisciplinary is what NEP 2020 is talking about and also multidisciplinary. तो no hard separation of arts, science and commerce. जैसे आप देख सकते हैं हमारे महाराष्ट्र के पलघर से आता है वर्ली आर्ट. वर्ली आर्ट एक बहुत खूबसूरत आर्ट है और बहुत फेमस आर्ट भी है. एंड यूजिंग वर्ली आर्ट congruence of triangles can be taught or the concept of triangles can be taught. So you can see here the integration of mathematics and also the integration of art. Right, the art integrated learning is what NDP 2020 is talking about. Right, also flexible subject choice and vocational education till grade 8 should be given, grade 6 should be given to the learners. Then holistic assessment. जो बच्चों का हम assessment करते हैं क्लास में, right, the assessment should not be only of pen and paper type. Assessment should not focus on what they are learning in classroom. असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का 360 चेक करे, मतलब बच्चे का हर चीज चेक करे. शिफ्ट फ्रॉम रोट एग्जामिनेशन टू 360 प्रोग्रेस कार्ड. ये 360 प्रोग्रेस कार्ड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज याद रखिए इस 360 प्रोग्रेस कार्ड का नाम है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. ठीक है, तो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या फिर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इसका नाम है. एंड बेस्ड ऑन परख असेसमेंट, जो हमारा परख स्कीम है, राइट, उसके हिसाब से ये बनाया गया है. एंड टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी. सो टीचर्स के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई है एनईपी 2020 के अंडर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि देयर आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक दीक्षा, राइट. देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और मेमोराइजेशन है, इसके ऊपर काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए जा रहे हैं. राइट, सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैंने ऑलरेडी कहा था इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऐसे बहुत सारे लर्निंग अप्रोचेस है जो सजेस्ट किए गए हैं कि क्लासरूम में होने चाहिए एंड इट शुड रिप्लेस द ओल्ड मेथड ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग. आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट टेस्टेड एनईपी पॉइंट ऑफ 2020 देखते हैं. 2020 पॉइंट ऑफ 2026 जो एग्जाम में पूछा गया था, अपने लेटेस्ट सीटेट एग्जाम में पूछा गया था 2026 के. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डज नॉट ले एम्फेसिस ऑन. हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे एम्फेसिस नहीं लेती है या फिर नहीं देती है. ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, ऑप्शन बी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी एक्सपीरियंशियल लर्निंग या ऑप्शन डी रिमोट लर्निंग या फिर रोट लर्निंग. ऑप्शन डी रोट लर्निंग.
आई थिंक सवाल सीधा है एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड द करेक्ट आंसर, दैट इज रोट लर्निंग। प्लीज ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल में नोट दिया गया है। इनमें से किस पे एम्फोसिस नहीं है एनईपी 2020 का, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का? तो करेक्ट आंसर है कि रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी एम्फोसिस नहीं दिया गया है एनईपी 2020 में। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, यस, बिल्कुल कहा गया है। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज शुड बी एट द फाउंडेशनल स्टेज, preparatory stage and also at the middle stage and the secondary stage. Conceptual understanding पे focus है, yes, conceptual understanding is very necessary and experiential learning as one of the major ways of learning is suggested. rote learning जो है वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया गया है एंड एज यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रोट लर्निंग। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द पॉलिसी। क्यों रोट लर्निंग नहीं? NEP 2020 moves decisively away from rote memorization. NEP 2020 कहता है कि रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन से बच्चों में कॉन्सेप्ट्स का समझ नहीं आता है, बस बच्चे जो है उसको रट्टा मार लेते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं। मगर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझे और ना ही बस समझे, उसको रियल लाइफ में यूज करे, और जब वो फ्यूचर सिटीजन्स बने तो इस अंडरस्टैंडिंग से हमारे देश को कॉन्ट्रीब्यूट करे। सो move away from rote memorization towards conceptual understanding, experiential learning and activity based learning. So the exact item appeared in all 4 sets of CTET 2026. Okay, then the same spirit drives the assessment reform. यही स्पिरिट में जो असेसमेंट है उसमें भी रिफॉर्म आया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाना चाहिए एंड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, for students, for what? For critical thinking, for creativity and genuine understanding of what is being taught. Okay, and if we focus on the exam shortcut for CTET, any option that praises memorization, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं और सीटेट में ऐसे कोई ऑप्शन दिया है जो मेमोराइजेशन को प्रेस कर रहा है या फिर रोट लर्निंग को, कवरिंग कंटेंट को प्रेस कर रहा है, इस अगेंस्ट एनईपी, इसको आप याद रख लीजिए। ओके, और एनीथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट रिलेट्स विद आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो व्हाट इट रिजेक्ट्स, व्हाट इट वैल्यूज। हमारी एनईपी 2020 जो है किस चीजों को रिजेक्ट करती है और कौन सी चीजों को वैल्यू करती है? इट रिजेक्ट्स रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोट मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग को रिजेक्ट करती है। व्हाट इट वैल्यूज इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड it values that experiential learning should be the mode of learning, and it values learning through activities. The main aim is to develop students as critical thinkers, as creative thinkers and as independent thinkers and learners. Yes, let us move ahead now. NEP for the primary group. Let us focus on the एज 6 to 11। जो सीटेट क्वेश्चन 1 है, जो सीटेट पेपर 1 है, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? एनईपी पेपर 1 टीचर्स हैंडल द प्रिपरेटरी स्टेज। जो पेपर 1 में जो टीचर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, यूजुअली वो प्रिपरेटरी स्टेज हैंडल करेंगे एनईपी के प्रकार। एंड द टेल ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज, राइट, दिस इज द बेस, द लास्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि इसमें क्लास 3, 4, 5 के बाद वाले बच्चे आ रहे हैं और क्लास 1 and 2 भी आ सकता है। तो एनईपी 2020 यहाँ पे क्या प्रायोरिटाइज करता है, इसे देखते हैं। चलिए, एंड FLN इज द प्रायोरिटी। FLN का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इट्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, देख लीजिए एक बार, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN बाय ग्रेड 3। ग्रेड 3 तक बच्चों में जो है ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जानी चाहिए, ठीक है। एंड the goal is for this group a national mission with dedicated time each day। हमारे देश ने इस फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को एक नेशनल मिशन के तौर पे लिया है, राइट। FLN आपने कई जगह पे सुना होगा, कहीं स्कूलों के बाहर देखा होगा FLN लिखा हुआ, या फिर आप सब जानते भी होंगे कि FLN जो है एक नेशनल मिशन के तौर पे लिया गया है। एंड वी वांट टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड बाय द टाइम दे रीच क्लास 3 दे शुड बी एबल टू रीड एंड राइट। देन मदर टंग, टीच इन द होम लैंग्वेज और मदर टंग एटलीस्ट टिल ग्रेड 5। तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के टीचर्स दोनों ध्यान दीजिए इस पे कि टीचिंग जो है
till grade 5 should be in home language and preferably up to grade 8 in home language or in mother tongue. क्यों home language और mother tongue? क्योंकि it aids understanding and confidence. ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस को जो है सपोर्ट करती है. और क्या रेकमेंड किया जा रहा है यहाँ पे? प्ले बेस्ड टू फॉर्मल, राइट. हमको शुरू करना है जेंटल ब्रिज, जो हमको एक प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से शुरू करके इंटरैक्टिव एंड डिस्कवरी बेस्ड मॉडल पे जंप करना है. जैसे हम फाउंडेशनल स्टेज से प्रिपरेटरी पे आ रहे हैं, प्रिपरेटरी से हम मिडिल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको बच्चों को खेल कूद के साथ साथ उनको सेल्फ डिस्कवरर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है, जहां पे स्टूडेंट्स खुद से इंक्वायरी करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें, राइट. एंड वी आर नेवर फोकसिंग ऑन अब्रप्ट रोड मेमोराइजेशन. Okay, we are making them understand what concepts are, how do they function and how they relate to their everyday life. जब एक स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट सीख रहा है तो वो जब स्कूल के बाहर जा रहा है, फिर स्कूल के अंदर कहीं पे देख रहा है, तो द स्टूडेंट इज एबल टू रिलेट व्हाट दे हैव लर्नड, राइट, एंड ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि वो ये थ्योरी और या फिर ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ऐसे काम करता है. न्यूटन्स लॉ के लिए बच्चे खुद के एक्सपेरिमेंट्स तैयार करके चेक कर सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है बोल के. देन एक्टिविटी एंड ईवीएस, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज, रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज, ये जो है ये मेजर फोकस है फाउंडेशन प्रिपरेटरी स्टेज का. ओके, तो चिल्ड्रन आर टॉट टू एक्टिविटीज एंड देयर सराउंडिंग्स. देन नो डिटेंशन स्पिरिट, इस स्टेज पे बच्चों को डिटेन नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट्स विल नॉट रिपीट द सेम ईयर एंड कंटिन्यूअस एंड सपोर्टिव असेसमेंट इज टू बी गिवन टू लर्नर्स. अगर आप कंटिन्यूस सपोर्ट दे रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को असेस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के जो भी डिफिकल्टीज है देट कैन बी क्लियर्ड एंड असेस्ड ऑन स्पॉट, राइट. सो आइडेंटिफाई एंड क्लोज गैप्स अर्ली देन फेल टू लेबल चिल्ड्रन. यूजुअली यही कहा जाता है कि अगर एक छोटा बच्चा, अगर एक क्लासरूम में बच्चा, एक स्टूडेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म, इट्स नॉट द स्टूडेंट्स मिस्टेक, इट्स द टीचर्स मिस्टेक. द स्टूडेंट हैज बीन विथ यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. So it is your responsibility to take care of the learner, provide the required materials, required support and required environment for the child to learn effectively. ठीक है. Then toys and local context. एक one more important चीज जो फोकस की गई है NEP 2020 में, वो है toy based pedagogy. ठीक है, जो है ये है toy based pedagogy. टॉय बेस्ड लर्निंग जो है ये फोकस की गई है. तो बच्चे खिलौनों से सीखेंगे, खिलौनों से पढ़ेंगे. सो टॉय बेस्ड पेडागोजी यूज टॉय, स्टोरीज एंड लोकल मटेरियल्स फॉर लर्निंग, राइट. लर्निंग रूटेड इन द चाइल्ड्स ओन एनवायरमेंट, जो लर्निंग है स्टूडेंट के या फिर चाइल्ड के ओन एनवायरमेंट में रूटेड है. तो दिस इज फॉर प्राइमरी ग्रुप, दैट इज सीटेड पेपर 1 एज 6 to 11. जब हम जाते हैं अपर प्राइमरी ग्रुप पे एज 11 to 14, पेपर 2 टीचर्स क्या करते हैं? दे हैंडल द मिडिल स्टेज एंड NEP रीशेप्स द स्टेज अराउंड कॉन्सेप्ट्स, इंक्वायरी एंड स्किल्स. तो हमें समझना है कि NEP 2020 यहाँ पे क्या कह रहा है, किस तरह से टीचिंग होनी चाहिए, किस तरह से लर्निंग होनी चाहिए और किस तरह से इस एनवायरनमेंट को बनाया जाना चाहिए. हाउ ऑल ऑफ दिस शुड टेक प्लेस एंड व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशंस गिवन बाय आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज कॉन्स्ट्रैक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस. So what they have done here is they have recommended for introduction of more abstract concepts across disciplines. So students will be learning at this stage more abstract concepts in the subject of science, maths, arts, humanities, social sciences, all the subjects that are given at this stage, students will be learning. Then focus is on experiential learning. Students will learn by doing, that is inquiry, hands-on activities, projects. Discussion will replace the rote memorization in every subject. Students will learn through discussion. Students will learn through collaboration. अब cooperation में कितने सारे different activities है आप देख सकते हैं. फिश बाउल है, जिक्सॉ है, थिंक पेयर शेयर है, राउंड रॉबिन है और बहुत सारे जो है प्रैक्टिसेस अवेलेबल है. एंड लर्निंग शुड हैपन इन बाय यूजिंग ऑफ सच मेथड्स. ठीक है. एंड स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू इंक्वायरी. ओपन इंक्वायरी करा सकते हैं आप, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी करा सकते हैं या फिर गाइडेड इंक्वायरी करा सकते हैं टीचर्स के द्वारा. एंड सब्जेक्ट डेप्थ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचिंग बिगिंस एज आई वाज डिस्कसिंग बिफोर. जो मैंने पहले कहा था कि इस स्टेज पे, राइट, मिडिल स्टेज पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग शुरू होती है एंड सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीचर्स रहते हैं, बट विथ एन इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी स्पिरिट. ये बहुत जरूरी है. सब्जेक्ट टीचर स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मगर
सब्जेक्ट्स के बीच में लिंक होना चाहिए, सब्जेक्ट्स के बीच में जो है स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिलेट एंड कनेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग इन इंग्लिश टू व्हाट दे आर लर्निंग इन मे बी सोशल साइंस और साइंस एंड वाइस वर्सा अमॉन्ग एंड अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। देन वोकेशनल स्किल्स, इस स्टेज पे वोकेशनल स्किल्स पे बच्चों को दिया जाना चाहिए। एंड आप ऑलरेडी स्कूल में फॉलो कर रहे होंगे कि 10 days ऑफ बैगलेस पीरियड एंड इंटर्नशिप विथ लोकल एक्सपर्ट्स इज रिकमेंडेड एट दिस स्टेज। देन कम्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एम्फोसिस शुड बी ऑन क्वेश्चनिंग। बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि स्टूडेंट शुड आस्क मोर क्वेश्चन, स्टूडेंट शुड इंक्वायर मोर, राइट। देन दे शुड फोकस ऑन एनालिसिस एंड क्रिएटिविटी, right? The term scientific investigator, right, stands from the CDP syllabus, the child development and pedagogy syllabus में देखें तो the student should become a child in scientific investigator. ऐसे skills develop करने चाहिए where student thinks like a scientist and investigates like a scientist. So coding and the 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स जो अगर कोड करें तो कहा गया है कि कोडिंग जो है इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए स्टेज पे। एंड ऑलरेडी टेक्स्ट बुक आ चुके हैं एंड स्टूडेंट्स सीख भी रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी एंड 21st सेंचुरी लिटरेसी स्किल्स अप्रोप्रिएट टू द एज ग्रुप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड हियर। So this was about the upper primary group age 11 to 14 और class 6 to 8. आगे बढ़ते हैं। Let us see a question now. Under NEP 2020, the ability to read and write and to do basic number operations viewed as the indispensable prerequisite for all future schooling should be achieved by the end of grade 1, grade 2, grade 3 या फिर grade 5. हमने अभी तक डिस्कस किया था, याद करने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पढ़ने लिखने और बेसिक जो नंबर रिलेटेड ऑपरेशंस है ये करने के लिए कौन सा लेवल या फिर कौन से लेवल तक जो स्टूडेंट्स है ये अचीव करना चाहिए। क्या ये ग्रेड 1 तक है, ग्रेड 2 तक है, ग्रेड 3 तक है या ग्रेड 5 तक है? तो अगर हम देखें तो इट इज ग्रेड 3। ठीक है, हमने वेरी क्लियरली डिस्कस किया था पिछले यहाँ पे भी कि जब तक बाय द टाइम दे कम टू ग्रेड 3, right? Why is grade 3 is a line in the sand, right? NEP 2020 sets foundational literacy and numeracy by the end of grade 3. So grade 3 के completion तक जो स्टूडेंट्स हैं उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी आ जानी चाहिए। एंड इट इज द सिंगल मोस्ट अर्जेंट नेशनल गोल, प्लीज रिमेंबर दिस। A child who cannot read and do basic maths then struggles with all later learning. अगर बेसिक मैथमेटिक्स स्किल बच्चे में नहीं है, अगर बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल स्टूडेंट में नहीं है, तो जब वो हम प्रिपरेटरी स्टेज पर जाएंगे और उसके आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको जो है पढ़ने में, सीखने में, समझने में काफ़ी दुविधा आने वाली है। दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। सो इट्स urgent national goal to ensure that foundational literacy and numeracy is achieved by class 3. Okay, then it is backed by the national mission on FLN एंड ऑल्सो निपुण भारत। आपने सुना होगा FLN एंड निपुण भारत के बारे में, जो मैं अभी कह रहा था कि स्कूल के बाहर आपने पोस्टर्स देखे होंगे या फिर कुछ लगाए, आपको गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें आई होंगी, आपने उनको देखे होंगे, नोटिसेस देखे होंगे या फिर जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं स्कूल में वो देखे होंगे। एम्फेसिस नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ऑल्सो निपुण भारत प्रोग्राम के अंतर्गत डेली रिकमेंडेड टाइम, राइट, डेली रिकमेंडेड टाइम इज गिवन फॉर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, एंड दिस डायरेक्टली कंसर्न्स विद पेपर 1 बट पेपर 2 वाले भी प्लीज इसको याद रख लीजिए। सो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एसेंशियल्स क्या है? एवरी चाइल्ड बाय द एंड ऑफ एज 3 शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड डू बेसिक अर्थमेटिक्स। देन प्री रिक्विजिट फॉर ऑल फ्यूचर लर्निंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये एक बेस बनाता है, एक फाउंडेशन बनाता है फ्यूचर लर्निंग के लिए। ठीक है, एंड दिस इज बैक्ड बाय आवर नेशनल मिशंस, नेशनल FLN मिशन एंड निपुण भारत। देन डेडिकेटेड डेली लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टाइम इज अलॉटेड इन स्कूल्स एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर पेपर 1. Then let us look into the NEP 2020 versus the old system. क्या चेंज हुआ है पिछले सिस्टम से? So the old system was emphasizing on 10+2. The new system is now focusing on the 5+3+3+4 structure. That is, learning happens from age 3 itself. Here learning was happening from age 6. ठीक है, देन अर्ली चाइल्डहुड जो था सिस्टम के बाहर था, अभी अर्ली चाइल्डहुड हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द सिस्टम। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले इंग्लिश या फिर रीजनल था, और अभी जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इट शुड बी इन मदर टंग। देन
Earlier learning was heavily focused on rote and was content heavy. बहुत ज़्यादा content था पहले. अभी it is experiential, it is conceptual and it is activity based. Then streams पहले बहुत hard थे, rigid stream थे जैसे art, science, commerce. अभी flexible streams बन चुके हैं. Student चाहे तो वो मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है एट द सेकेंडरी स्टेज. नाउ असेसमेंट हाई स्टेक्स बोर्ड एग्जामिनेशन थे पहले, अभी हॉलिस्टिक असेसमेंट है एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है परख के अंडर. सो अगर हम क्विकली रिकॉल करें, सो NEP 2020 was approved on 29 July 2020, right? It replaces the 1986 national policy on education. Then it is brings a new structure of 5 plus 3 plus 3 plus 4, 5 being the foundation, 3 being preparatory, the next 3 being middle and the last 4 being the secondary. Then FLN must be achieved by the end of grade 3 and NEP 2020 rejects rote learning. So I think now you have got a very clear idea and understanding about what our National Education Policy 2020 talks about. And अगर इसके basis पे अगर questions दिए जाए तो you will be able to address and you will be able to solve them. With this we conclude the session. Thank you.